A very good evening to all of you. Welcome everyone to the class, to the session. Quant class 4 of RBI Grade B Charge 2025 crash course. Welcome to all. Good evening Rohan, Ishani. Good evening Manoj, Shreya, Pankaj, Nupur, Manoj, Reva, Sabia. A very good evening to all of you. Quickly confirm if the audio, video, everything is good. You can hear me, see me properly, clearly. Good evening, Srishti, Krati. Yes, welcome to Charge 2025 RBI Grade B 2025 revision series. All clear? Yes. So today is, as you can see on the title, class number 4, and the chapters which we are going to cover for today are time, speed, distance. Very important. Time, speed and distance, very important. Then you have the chapter of partnership, and we have the chapter of and profit loss and discount. These three chapters which we are going to cover today. Okay, yes, good evening to all. Before we start, announcement, or I would say information to those of you who are maybe new to the channel, have come first time to the channel, or to this, who are unaware about this, what is this Charge 2025. So this is our crash course plan. It is out, it has been launched. There are no multiple batches, there is only single batch, and today is the day 4 of level 2. We have divided into different levels. Level 0 was the planning, where we discussed the plan, the whole plan. Then in level 1 we discussed the PYQs of the last 3 years. Now this is level 2 currently, which we are into, and here we are clearing your concepts, discussing, revising, doing revision, doing practice through notes, through questions. Then level 4 will be practice, where everything will be revised, will be practiced through MCQs. And then final revision basically here means is the marathon classes, okay, just before the exam, 1 week before the exam. So this is the entire roadmap. So if you are planning to enroll, so I would recommend, don't delay, okay, enroll, because if you delay, you will be creating a lot of backlog for yourself. If you enroll, it's not that much of a backlog you can cover, but if you delay it, you will have to cover the previous videos. Okay, and if you have any doubts, any questions regarding the course, exam, anything, you can always connect to our counselors, okay, on the number 9999 466 225. Now I'll come to our today's topic without any ado. So okay, as I told you, we'll start with time, speed and distance. We'll be starting with time, speed and distance. That would be our first chapter for today. All right. I hope it's very clearly visible to all of us, the question. So I have highlighted the questions which we will be discussing, starting with question number 2. I hope it's clear to all. Yes, you can start with question number 2. Yes, good evening Ayush, Rashi, Yugmita, Afsana, very good evening. Starting with question number 2, and time, speed and distance. Time, speed and distance, and boats and streams. Actually both of them. We'll be covering both of them. Okay. Time, speed and distance, and boats and streams, both. Okay. All right. So as I've told you, you can put a timer at your end. आप 3 मिनट का 2.5 मिनट का एक timer 3 मिनट का लगा लीजिए, 3 minute timer at your end, and try to do the questions within that timer. Okay, within that time span. All right, the question is in front of you. The question is the ratio of length of two trains. The ratio of length of two trains is 5:3. Okay, the ratio of length of two trains is 5:3, and the ratio of their speed is 6:5. Okay, question is ratio of time taken by them to cross a pole. Yes or no? Question is clear? See what's given to us. So let's say the length of the first train is 5x. I can assume it to be 5x. Okay,
I can assume it to be, let's say 5x, and let's say the other is 3x. These are, let's say these are the, I'm assuming these are the lengths of the two trains. Now their speeds, let's say 6y and 5y. Now what is time? What is time? Matlab you can even you can even ignore these x and y. What is time? What is time? Okay, time is distance upon speed. Always remember distance is equal to, sorry, speed is equal to distance upon time. So time will be distance upon speed. तो हमें निकालना क्या है? टाइम का रेशियो निकालना है. गेटिंग इट? 5/6 is to 3/5. Taking the LCM, 25 is to 18. Yes, option number C. Simple enough. I don't think there should be any doubt in this. Moving on to the next question. Question number 4. Question number 4. Okay, this is an important chapter, and this is one chapter जहाँ पे a lot of students, aspirants have doubts, problems, difficulties. This is what I have observed throughout the year. एक दो chapters हैं जिसमें ज़्यादा problem होती है, like time and work, time, speed, distance. These are some chapters. Like question number 4. Harsh and Vijay move towards Hosur starting from IIM Bangalore at a speed of 40 and 60. If Vijay reaches Hosur 200 minutes earlier than Harsh, what is the distance between? So distance को हम assume कर लेते हैं. We can assume distance to be d. Now we are given something about time. We are given. अब देखो Vijay is reaching earlier, तो which means Harsh is taking more time. Now what is time? Distance upon speed minus distance upon speed. तो ये आपको देखना है कि bigger value minus smaller value obviously. Not 200 minutes. So units का बहुत ध्यान रखना है. Everything is in kilometers and hours. Okay, everything is in kilometers and hours. Now this is the calculation you have to do. Now obviously you can simplify it. This will be 10/3. Okay, now you can take d common, and 40 and 60 LCM is 120. So I'm directly writing 3 minus 2 upon 120. That is 10/3. So distance will be what? 10/3 into 120. This will be 400 kilometers. So the distance between IIM Bangalore and Hosur is 400 kilometers. Okay. आगे चलते हैं question number 5. A driver, yes, a cab driver driving in fog passes a pedestrian who was walking at the rate of 2 kilometers per hour. The pedestrian could see the car for 6 minutes and it was visible to him up to a distance of 0.6 kilometers. Question is, what was the speed of the car? What was the speed of the car? Yes, देखो इसमें क्या है, पेडेस्ट्रियन की जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर. कार की स्पीड आपको नहीं पता, बट इफ यू सी वन थिंग, ठीक है, अब देखो इसमें एक बात समझना, स्पीड ऑफ द कार कैसे निकाल सकते हो आप? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. और डिस्टेंस इज ही कैन सी द कार फॉर दिस मच किलोमीटर फॉर दिस मच मिनट, लेकिन मिनट्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. पहली चीज बात समझना, आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दिस विल बी 0.6 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू, बट ये कार की स्पीड नहीं आई है, बात समझना. दिस इज नॉट द स्पीड ऑफ द कार, दिस इज एक्चुअली देयर रिलेटिव स्पीड. ये हमने जो कैलकुलेट किया है, व्हाट इज इट? दिस इज रिलेटिव स्पीड. व्हाई? बिकॉज पेडेस्ट्रियन इज नॉट stationary, he is also walking, and when two objects, two bodies are moving in the same direction, their speeds are subtracted. Always remember, the speed of the car minus speed of the pedestrian, this is 6. So speed of the car would be 6 plus 2 is equal to 8 kilometers per hour. Absolutely, relative speed, relative velocity concept. Okay, so option number D is the correct answer. Yes, rightly answered by you. Yes, Shreya, Shruti, Rohan, Ayush, Yugmita, Pankaj, बिल्कुल ठीक है, absolutely correct. Moving on to the next question then. Question number 12. Let us come to question number 12 now. Okay. It says, two cyclists start simultaneously towards each other from Aurangabad and Ellora. So there are two places, Aurangabad and Ellora. And there are two cyclists. They are moving towards each other. Always remember, now relative speed would be the sum of both the speeds because they are moving towards each other. Okay, getting it? Which are 28 kilometers apart. An hour later, they meet and keep paddling with the same speed without stopping. The second cyclist arrives at Ellora 35 minutes later.
Find the speed of the cyclist who started from Ellora. देखो इंग्लिश के लिए आई वुड से यू डोंट रियली नीड टू वॉच a lot of videos. If you practice from the book, from the questions given, that would be sufficient. And if you have some, if you are weak in some grammar topics, something, then you can always cover that topic from any grammar book. But I don't think there is a lot of need to watch a lot of videos. Videos are, although they are in the course itself, course में भी videos हैं ही, but it's more about practice. Okay. Yes, two cyclists start towards each other from Aurangabad and Ellora. Yes, this question. Now the distance between these two places is 28 kilometers. An hour later, okay, an hour later they meet. Now try to understand. They have met at some point, and so the total distance they have covered in 1 hour. So in 1 hour they have covered 28 kilometers. So what does it mean? It basically means that their relative speed is equal to 28 kilometers per hour. That is, the speed of cyclist 1 and cyclist 2 is 28 kilometers per hour, because 28 is their relative speed. Try to understand. Now it says the second cyclist arrives at Ellora 35 minutes later. So he is the slower one. Okay, he is the faster one. ठीक है, तो first cyclist, the faster one, he started. Okay. Now try to understand. Second cyclist arrives at Ellora. Okay, which means he started from Aurangabad, and which means the faster one started from Ellora. Okay, now what they are asking is find the speed who started from Ellora. So they are asking you the speed of the faster cyclist. They are asking you the speed of the faster cyclist. Now try to understand. The faster cyclist, now we can use some logic. We can do conventionally also, but it is very clear that the faster cyclist would be more than 14 kilometers per hour, because half of 28 is 14. Faster one should be more than 14 kilometers per hour speed. And there are only two options, 16 and 15, which are more than 14. So this is also how we can sometimes use options to solve the question quickly. Now let's say if you check with 16, so the two speeds are 16 and 12. Now you need to see whether the difference is 35 minutes or not. So 28 divided by 16, how much time he has taken? Distance divided by speed. Yes. So how much time he would have taken? If you simplify it, 14 by 8 is equal to 7 by 4, which basically is 1.75 hours, or it's like 1 hour and 3 by 4 of the second hour. So basically it's like 1 hour 45 minutes. And what about the slower cyclist? His speed would be 12. So 28 divided by 12. So 4 into 3, 4 into 7. So what is it? It is 2, 1 by 3. Yes, so 2 hours 20 minutes. And you can see the difference is coming out to be 35 minutes. So this is satisfying. This is satisfying. The answer will be 16. Option number B, 16. Yes? Yes, answer will be 16. Absolutely. This is, we can do like this also. Because we have eliminated 3 options. We have to only check 2 options. And try to understand, actually 2 भी चेक नहीं करने हैं, एक ही चेक करना है. अगर एक से आंसर नहीं आ रहा, 16 से नहीं आ रहा तो 15 आंसर है, और 15 से नहीं आ रहा तो 16 आंसर है. तो you have to check only once. ठीक है. Now moving on, next question, question number 13. Last part again. Last part what I told you was, in the meanwhile, yes पंकज, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर. आप लोग क्वेश्चन 13 ट्राई करें. मैंने क्या समझाया है आपको in this question, that the sum of the two cyclists, their speed is 28. मैंने आपको ये बोला फास्टर साइक्लिस्ट जो होगा उसकी स्पीड 14 से ज्यादा होगी. हमारे पास 2 ऑप्शन थे, 15 और 16. तो मैंने 16 को चेक करा. तो assuming the speed of the faster is 16, slower is 12. Now what is the formula of time? Time is distance upon speed. So 28 kilometer divided by 16 kilometer per hour. This gives me 1 hour 45 minutes. मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे 7 by 4. 7 by 4 क्या होता है? 1 3 by 4 hours. 1 3 by 4 hour is 1 hour 45 minutes. And then slower cyclist 28 kilometers at the speed of 12 kilometers per hour. He will take 2 hours 20 minutes. Okay, so the difference should be 35 minutes. As per the question, the difference in their time is 35 minutes, and we are getting the difference as 35 minutes. It is satisfying.
So it should be the answer. Now question number 13. Jammu Kashmir Express from Delhi to Srinagar, okay, was delayed due to snowfall for 16 minutes and made up for the delay on a section of 80 km per hour, 80 km traveling with a speed of 10 km per hour higher than the normal speed. Find the original speed. Assuming the original speed is n, or let's say s, whatever. Now, try to understand. There is a delay of 16 minutes. So, the train has to cover up these 16 minutes. Now, try to understand. Uh, Distance is 80. What is the formula of time? Time is distance upon speed. So, the point is that if it has traveled at the original speed minus if it is now traveling, okay, if it is now traveling at 10 kilometers per hour more speed, the difference should be 16 minutes, but everything is in hours and kilometers. So 16 by 60. This much only now we have to solve. Okay, so this will be cancelled, 5, 5 and 1. If you are able to do this, this is very helpful. You can take 5 common out here. So this will be s plus 10 minus s. I'm directly writing s square plus 10s. This is equal to 1 by 60. So s and s get cancelled out. So we are 5 into 10 into, this is 5 into 10 into 60. Okay, is equal to s square plus 10s. So s square plus 10s. Okay, minus, this is what? 3000? Isn't it? Is equal to 0. So it's a quadratic equation. First section is 80. It is given ना कि डिले जो हुआ है फिर उसने इस डिले को कवर अप किया है ऑन अ जर्नी कितने किलोमीटर्स की है द इंटायर जर्नी वी डोंट नो वी डोंट इवन रिक्वायर ही कवर्ड अप in the 80 kilometer that belt of 80 kilometer. So he has to save 16 minutes. So we need to find the now the original speed. Now here that see in the class of quadratic equation, मेरी बात समझो, मैंने आपको quadratic की class में in the class of, it was our class number 1 only, I think, yes, in the class number 1 in this series. So if you have not watched the previous sessions, do watch the previous sessions. Now I have told you that when b, the coefficient, there are 3 coefficients a, b and c in a quadratic equation. So when b is positive and c is negative, so I have told you that one root will be positive, one root will be negative. Try if you remember. Okay, one root will be positive, one root will be negative. And I told you that the positive root will have a lower value, absolute value, and the negative root will have a higher absolute value. And if you think of two numbers whose product is minus 3000, whose sum is 10, the two numbers are 60 and 50. Well, 60 and minus 50. Okay, 60 and minus 50, those two numbers, if you remember how we did it. But as I told you, the higher root will be negative. So this will be minus 60, this will be plus 50. So we will take only the positive value because speed cannot be negative. Speed cannot be negative. So 50 kilometers per hour is the normal speed of the train. Getting it? Ayush, you have not got the question. The question is that, understand, ki if he had traveled that 80 kilometer at the normal speed, minus if he is now traveling that 80 kilometer at the increased speed, he should save 16 minutes because the train has lost 16 minutes, so it needs to save 16 minutes. Okay, now next question, question number 14. A pedestrian and a cyclist start simultaneously towards each other from Ajmer to Pushkar, which are 40 km apart, and they meet after 2 hours after they start. Then they resumed their trips and the cyclist arrived at Ajmer earlier. Which of these could be the speed of the pedestrian? Yes. Yes, Rohan has rightly explained, Ayush. I think you must have understood now. Okay, Rohan and Amit are saying that option number A, 4 kilometers per hour should be the answer. Okay.
Let's break the question. Let's break down the question. It's like a pedestrian and cyclist start simultaneously towards each other from Ajmer to Pushkar. So there are two places which are 40 kilometers apart, and these pedestrian and cyclists are moving towards each other. Okay, and they meet after 2 hours. Now try to understand. They are covering 40 kilometers in 2 hours, which means 20 kilometers per hour is their relative speed. Okay. Now, then they resume their trips. After meeting, they resume their trips, and the cyclist arrives at Ajmer 7 hours 30 minutes earlier than the pedestrian. 7 hours 30 minutes earlier than the pedestrian. What does it mean is, let's say it basically means the speed of the cyclist as per the question is more than the speed of the pedestrian. This is one thing which I can decode from the question, which I can infer from the question. Now, assuming the speed of the cyclist, let's say the speed of the pedestrian is, I am assuming, let's say it is s, the speed of the cyclist will be 20 minus s, because the sum of both of their speeds is 20, which we have calculated. Now, what is the formula of time? Time is distance upon speed. So, distance upon, try to understand, distance upon, speed. What is the slower? Who is the slower person? Now, pedestrian is the slower person. The slower person will take more time, minus faster person will take less time. The slower minus faster will give me the time, that is 7 hours 30 minutes. Now 7 hours 30 minutes is 7.5 hours. Yes? So I can take 40 common. So I'll be left with 1 by s minus 1 by 20 minus s. Okay, is equal to 7.5. So this will be 20 minus s upon 20s minus s square is equal to 7.5 by 40. I have to find the value of s only. Yes or no? So 20 minus 2s upon 20s minus s square. If you simplify this, these both will cancelled in the table of 2.5. 2.5 into 3 and 2.5 into 16. So 3 and 16. If you just cross multiply, 60s minus 3s square is equal to 320 minus 320s. Can you solve it now? So 3s square, okay, minus, what it will be? Yes, tell me. Minus 380s, okay, plus 320 equals 0. So can you find out the roots? By either of the method, Sridharacharya method or factorization method. Okay, any method you can use. Yes or no? Okay, this is 32s, not 320s. So a slight mistake over here. This is 32s. So 32. So this is 92s. 92s. Okay. So you can find the two roots. Can you find the two roots? Think of two numbers whose product is 960 and whose sum is minus 92. Think of two numbers. So you will find such two numbers are 80 and 12. And I told you have to divide by this shortcut method, divide by the A coefficient, 80 by 3, 12 by 3. So one value comes out to be this 26.67 and one is 4. This is not possible because दोनों की स्पीड का सम है 20, तो किसी एक की स्पीड 20 से ज्यादा नहीं हो सकती ना, वेरी ऑब्वियस. So 4 will be the answer. 4 will be the answer, rightly answered by Harshita, Ayush, Amit, Rohan. Yes, थोड़ा सा लेंदी ट्रिकी था, but I hope it's clear to all. ठीक है, रेवा, yes, correct, absolutely correct. Moving on, question number 16. ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, बिकॉज रेस, सर्कुलर रेस या लीनियर रेस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं. लाइक विनय रन्स 100 meters in 20 seconds, Ajay runs the same distance in 25 seconds. By what distance will Vinay beat Ajay in a 100-meter race? Yes. Can you tell me the answer for this quickly? Question number 16. Yes. Pankaj says 25. Okay. Rohan says 20. All right. Any other answer, anyone? See, how do we do this question? Try to understand. What is the speed of Vinay? Can you find out the speed of Vinay? If I ask you. Now,
the speed of Vinay is 100 by 20, that is 5 meter per second. What is the speed of Ajay? The speed of Ajay is 100 by 25, that is 4 meter per second. Now obviously Vinay is faster. Now the question is, in a 100-meter race, now try to understand, in a 100-meter race, how much time will, मतलब this is actually not required also, मतलब you can directly do also, but ठीक है, in 100-meter race, in how much time Vinay will cover this? Vinay will take 20 seconds. Okay. Now what about Ajay? In 20 seconds, what is the distance Ajay will travel? Distance is equal to speed into time. The speed of Ajay is 4 meter per second into 20 seconds. So Ajay will cover 80 meters when Vinay will cover 100 meters. So Vinay will beat Ajay by 20 meters. Option number B. 20 meters. Yes or no? 20 meters. Yes? समझ में आ गया सबको? Okay. Question number 21. Let's move to question number 21. 80 तो cover करेगा रेवा, but he will beat by 20. है ना? P lives at A and Q lives at B. So probably there are two places, A and B. P lives here and Q lives here. Okay. Now P usually goes to meet Q at P. Matlab he's saying, the question is saying P goes to meet Q at B. Okay. Now he covers the distance in 3 hours at 150 kilometers per hour, which basically means that the distance between A and B is, distance is speed into time. So distance is 450 kilometers between these two places. This is the meaning. This we have to calculate. Yes. Now on a particular day, Q started moving away from P while P was moving towards B. P took 5 total hours of 5 hours to meet Q. Now there are two questions, and if you look at the options, there are two parts of the options also. One is speed of Q, one is ratio of their speeds. Two things. Okay. Yes, try this out quickly. Rohan says option number A. Okay. Yes, everyone, try this out. Okay, let's do it then. Now it says on a particular day Q started moving away. So Q is moving in this direction, P is also moving in the same direction. So their relative speed will be the difference. And P ultimately caught hold of Q. It means the speed of P is greater than the speed of Q, obviously. Now try to understand, distance is 450. Now what's their relative speed? Now I know that the speed of P is 150, but I don't know the speed of Q. And this is taking 5 hours. I can find Q. So 450 is equal to 750 minus 5Q. So the value of Q will come out to be how much? 60. So 60 is the first answer of the first part, and the ratio of their speed 150 and 60, the ratio is 5:2. So yes, option number A is absolutely the correct answer. Yes guys, बिल्कुल ठीक है. Rohan, Amit, Harshita, Pankaj, very well done. Okay, बिल्कुल absolutely correct. Quant 22 we can skip because we have done this type of a question. Let's move to, or okay, let's do question 22. थोड़ा सा tricky है. Let's do 22 also. Question 22 is, A can beat B by 200 meter in a race of 2000 meter. B can beat C by 100 meter. By how many meter can A beat C in a 1000 meter race? है ना? Try this out. Question 22. So Reva, what we did was, we calculated this distance. I think this much you must have done. Distance is equal to time, 3 hours, into speed. So that is the original distance. That is the distance between A and B. That is the distance between P and Q. Now as per the question, on a particular day, P was going to visit Q and Q started moving away from P. So basically away from P would be in the direction, same direction as P. Now
here the concept of relative speed will be applicable. Relative speed, when both the bodies are moving in the same direction, we subtract their speeds. I have assumed that the speed of q is q only. Now time is equal to distance upon speed. So time is that p catches q in 5 hours. Okay. Now I cross multiplied. I got the value of q as 60. This is the answer of the first part. And second part was asking about the ratio of their speed. Okay. Okay. Now question number 22. Now I can find the ratio of their speeds from here. Like A, try to understand. Like hey, here A can beat B in a race by 200. Matlab, when A covers 2000 meters, B covers 1800 meters. Now the formula is speed is equal to distance upon time. So when time is constant, the ratio of speed is the same as the ratio of distance. So this ratio is 10:9, and this is the ratio of their speed also. If I talk about B and C, so when B covers 2500, C will cover 2400 meters, because B is beating C by 100 meters. So what is the ratio? 25:24. Now if I have to combine A, B and C, try to understand. Now B is common, 25 and 9. LCM of 25 and 9 is 225. To make it 225, I will multiply by 25. So this also I have to multiply by 25. So 250, 225. And understand, this 25 has to be multiplied by 9 to make it 225. So this is also multiplied by 9. So 216. This is the ratio of their speed. Now in a 1000-meter race, so if you multiply by 4 to make it 1000, so when A will cover 1000, C will cover 864 meters. So by how much distance he will beat C? 1000 minus 864 is equal to 136, which is option number B. Rohan has only given the correct answer for this question. This question is little tricky, I can understand. Tricky, or maybe it's something which you might not have studied, might not have understood. आपने concept शायद नहीं सीखा होगा. I have taught it in the course, in our course, but maybe दोबारा देखो क्या है क्वेश्चन समझना, एक बार फिर से समझ लेना. Jai Shri Ram. So you can cover, I think you can start in the final year probably. Matlab, you can write the exam. Okay, you can start in the final year, maybe in the second year. मतलब it's not necessary to start in the first year itself. Second year से भी आप start करोगे, mid of second year. Okay, मतलब probably if you are new to exam, if you are new to quant reasoning, these things, it can take, मतलब a safer time would be 1 year. But if you are good at quant reasoning, these things, then 6 months is also enough if you can extract good time. But I would say ideally 1 year. Okay. Okay. Now, so this is, so the question was ki A can beat B by 200 meters. The meaning is, if when A covers 2000, when A covers 2000 meters, in that same time, B covers 1800 meters. That is how he's beating by 200 meters. So the ratio of their distance is 10:9. That will be the ratio of their speed also, because speed and distance are directly proportional, directly related to each other. Similarly, I calculated the ratio of the speed of B and C. And then I find out their combined ratio ABC by taking the LCM, because B was common, 25 and 9. 25 and 9, LCM is 225. So I made it 225. So I have to convert the other ratios as well. And then what I did was, I was asked that in a 1000-meter race. So if you decode this, this is like when A covers 250 meters, B covers 225 meters, and C cover 216 meters. This is how we can understand this. But we are asked about 1000. So 250 into 4 and 216 into 4. This is how we did it through a shortcut. Okay. Now question number 23. A good strain of length 120 meter traveling at a speed of 60 km per hour overtakes a car moving at a speed of 30. Okay, try to understand.
An hour later, the train crosses a tractor moving in the opposite direction at a speed of 15. After how much time from the time the train had overtaken will the tractor and the car meet? So, if you notice carefully, there are three bodies: train, car, and tractor. There are three bodies, three moving objects. So, train and car are in the same direction, and tractor is in the opposite direction. Yes, Pankaj, it is possible, provided you have covered this syllabus. You have been preparing for the last 2 months, and if you have covered this syllabus, majority of this syllabus, yes, you can do it. And you can also uh, get to know about where do you stand right now by writing the mocks. The 2 mocks have been uploaded. The third mock will be uploaded soon. So the mock test is a good way to judge where do you stand right now. Definitely you can do, okay, but you have to see if you are lacking somewhere, if any weaknesses are there, that you will also understand through tests, through mock tests, through revision tests, okay. And I can see that Pankaj and Rohan and other people also, but if I talk about you two, so you two are very consistently able to answer the questions in the classes, which shows that yes, you have you are doing pretty good. Reasoning is very low, 1.5. Quant is good. Quant score is good, but reasoning is 1.5 if I can see it correctly. It's very less. Okay. श्रेया फ्राइडेज को लिख सकते हैं, जैसे आप लोग फ्राइडेज को क्लासेस नहीं है अभी के लिए, आप वो कर सकते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू, आफ्टर 19th आपको 3 आवर्स का स्लॉट खाली मिलेगा, 10:30 to 1:30. उसमें लिख सकते हैं आप लोग. थोड़ा टाइम तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर क्लासेस, कोई क्लास आप मतलब यू हैव टू एडजस्ट. देखो टाइम तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना. थोड़ा थोड़ा इट्स ओनली अ मंथ, एक मंथ की ही बात है, तो थोड़ा सा स्ट्रेच तो करना पड़ेगा, बट यस हो जाएगा. डोंट वरी अलॉट अबाउट इट. ओके. रोहन, आई आंसर योर डाउट. पहले क्वेश्चन देखते हैं, आई कम टू योर डाउट. देखो, अ गुड्स ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60. तो ये क्या है कि ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और जो आपका ट्रैक्टर है उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे. एन आवर लेटर मतलब कार को ओवरटेक कर दिया ट्रेन ने, उसके 1 घंटे बाद उसने ट्रैक्टर को क्रॉस करा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो उस 1 घंटे में उसने उस ट्रैक्टर को क्रॉस करा है. अच्छा, अब एक बात समझो, ट्रैक्टर इज मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एंड ट्रैक्टर, दे आर मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, आपकी स्पीड एड अप हो जाती है. अच्छा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कितनी हो गई ट्रेन और ट्रैक्टर की, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, 60 + 15 75 किलोमीटर पर आवर, एंड इट टुक 1 आवर. तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 75 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन एंड ट्रैक्टर. व्हेन, ये डिस्टेंस कब है, व्हेन ट्रेन ओवरटुक द कार, उस समय पे इतना डिस्टेंस था. अब आपको बताना है कि कार और ट्रैक्टर को मीट करने में कितना टाइम लगा होगा. नाउ कार स्पीड इज 30 एंड ट्रैक्टर इज 15. रिलेटिव स्पीड विल बी 30 + 15 45 किलोमीटर पर आवर. तो दिस विल गिव यू टाइम. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो 75 अपॉन 45 सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इसको. 15 डिवाइड बाय 5 9 डिवाइड बाय 3 5 and 3. This is 1 2/3 hours, which is 1 hour
and 40 minutes. What is 2 by 3 of an hour? It is 40 minutes. So 1 hour 40 minutes, that is option number A is the correct answer. Option number A. Are you getting the answer? Are you getting this? So Rohan, देखो reasoning में I would say you can try out different strategies in different mocks. You can try it first of all in some mocks, try to do puzzles. Try to identify 2 puzzles or let's say 3 puzzles out of 5 or 6. Identify 2 or 3 which are doable. Do them first. Because if you can do let's say 2 puzzles also correctly, you will get 10 marks. And in the remaining time, let's say in doing 2 puzzles, let's assume in doing 2 puzzles you spend 30-35 minutes, assuming. For example, let's say 30 minutes. In the remaining 15 minutes, try to do 2, 3, 4 questions, 5 questions, let's say. You will reach to more than 10 by this. Malab, you have to try to reach to 15 marks at least in reasoning. 15 minimum in reasoning. Try to reach 15. I would say 20. Aim should be for 20. Again, it depends upon the level of the mock also. But you can start with puzzle also. That is also good. Now question 23 is done. Okay. I think we'll do one more question of time, speed, distance. Then we'll move to profit, loss and discount. है ना? Yes, you can try for mock test 2. This strategy. Question 24. 2 trains, Kolkata Mail and Bombay Mail, okay, start at the same time. 2 trains, Kolkata Mail, Bombay Mail. नुपुर अटेम्प्ट थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब मैं कह रहा हूँ 15 का मिनिमम स्कोर हमें ट्राई करना चाहिए. आइडियली वी शुड एम फॉर अटेम्प्टिंग 20 क्वेश्चंस, 20 एंड अबव. 20 एंड अबव इज गुड. मतलब I still say it also depends कि अगर क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा है, पेपर का लेवल इट्स वेरी हाई, it can change, but people have scored, you know, aspirants have scored 20 marks in reasoning, 20 and above, okay. But if you are facing difficulty, your first target should be to reach 15. Yes, you can do it, Jai Shri Ram, you can do it. Okay, question 24, please. Harshita, so so when you log into the Learnis portal, so you can see different courses. Like one is Crash Course 2025. You will find one course by the name RBI Phase 1 Test Series. In that, if you go into that, you will find 2 tests, Test 1, Test 2. Question 24, yes, come back to the question now. 2 trains, Kolkata Mail and Bombay Mail, start at the same time from stations Kolkata and Bombay, respectively towards each other. So Kolkata Mail started from Kolkata, Bombay Mail started from Bombay. Okay. Now after passing each other, they take 12 hours and 3 hours to reach Mumbai and Kolkata respectively. Kolkata Mail is moving at the speed of 48, then speed of Bombay. Now do this question very carefully. I've got one answer from Amit. Amit says 96. Okay. Now see, try to understand. Let's say they meet at some point. Let's say they meet at point, any point. Let's name the point as O. Point O. They meet at point O. And now assume, see, the speed of Kolkata Mail is 48 kilometers per hour. That is, we are given. And let's say they meet after Y hours. Assume they meet after X hours, Y hours. Okay. There are 2 attempts in mocks. 2 attempts are given. Okay. So let's say they meet after Y hours. Now what is distance? Distance is equal to speed into time. So what will be this distance? This distance would be speed, that is 48 of Kolkata Mail into time. So this distance would be 48y. And it says the Kolkata Mail is taking 12 hours to reach to Bombay. So this remaining distance would be 48 into 12 is equal to 576. This is very important. So total distance becomes 48y plus 576 kilometers. This is the total distance. This is something, if you have, understood this, if you did this, then the question can be done. This was something to understand in this question. Now the question says that this Bombay Mail
now try to understand. The Bombay Mail is also covering 570, the same distance. Both the trains are covering the same distance. But the point is, to cover this 576 kilometers, Bombay Mail would take how much time? Or sorry, what is the speed of Bombay Mail? The speed of Bombay Mail would be, what is speed? Distance upon time. It is taking again 5 y hours. Okay. How 576? 48 into 12. The question says Kolkata Mail is moving at the speed of 48 and it says that it is taking 12 hours after crossing each other. It is taking 12 hours and Bombay Mail is taking 3 hours. What the remaining distance? And 48 speed into time. What is distance? Speed into time. So this 576 by y, okay, this is the speed of the, what is this? This is the speed of the Bombay Mail. Now, again, as per the question, to cover the 48y kilometer, it is taking how much hours? 3 hours. Yes or no? To cover, try to understand. To cover, yes or no? Try to understand. Distance upon time. To cover the 48y kilometers, it is taking, yes or no? Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताएंगे. Are you able to understand or not? Yes, everyone. Able to understand? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या करा है हमने? तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, y की वैल्यू निकाल सकते हैं. दिस टू विल बी इक्वल. इक्वल क्यों होगा? दिस इज ऑल्सो गिविंग मी द स्पीड ऑफ बॉम्बे मेल, दिस इज ऑल्सो गिविंग मी द स्पीड ऑफ बॉम्बे मेल. तो दो स्पीड, दोनों एक ही की स्पीड है. तो यहां से क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर विल बी 576 इंटू 3 डिवाइड बाई 48, दिस विल बी 16. तो यहां से क्या वैल्यू निकल कर आएगी आपकी? दिस विल बी 36. सो y विल बी इक्वल टू 6. But we don't need y. We need 576 upon y because that is actually the speed. Y is not the speed. Y is the time. 6 का मतलब है कि वो 6 घंटे बाद दोनों ट्रेन मीट करा था. ठीक है. तो 576 upon 6 will give you the answer as 96 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेंदी है, आई नो. ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ऑब्वियसली इट्स नॉट नेसेसरी टू डू सच अ क्वेश्चन. You can leave also. You have to leave some questions also. It's not necessary, but at least you should know कैसे करना है क्वेश्चन को. Yes, तो थोड़ा सा है लेंदी क्वेश्चन कि पहले सबसे पहले हमने डिस्टेंसेस कैलकुलेट करे हैं. टोटल डिस्टेंस हमने निकाला, दैट इज 48y प्लस 576. थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, डेफिनेटली नॉट दैट इजी. ठीक है. सो दिस इज time, speed and distance. Now I think we can let us move to the next chapter for today. हाँ, एक ये शॉर्टकट भी आप लगा सकते हो डेफिनेटली, विच आयुष मेंशन. ठीक है, बट यही है कि शॉर्टकट का, यस, शॉर्टकट बिल्कुल लगा सकते हो आप. यहाँ पे आपको बस पता होना चाहिए शॉर्टकट कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता. जैसे आयुष ने सेट, देयर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा v1 by v2, ओके, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t2 by, ये भी हम लगा सकते हैं t2 by t1. ठीक है. तो स्पीड, अब देखो आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोलकाता और मुंबई, तो मुंबई जो है, कोलकाता मेल की बात करते हैं तो उसकी स्पीड है 48, मुंबई की हमें नहीं पता, v2 मान लेते हैं. टाइम कितना लग रहा है कोलकाता मेल को? 12, और उसको लग रहा है 3. सो फ्रॉम हेयर 48 बाय v2 इज इक्वल टू 2. अच्छा, t2 की स्पीड, हाँ मैंने वो गलती कर दी यहाँ पे, 1 सेकेंड. दिस इज 3 by 12 होगा. यस 3 by 12 होगा. सो दिस विल बी
1/4 यानी कि अंडर रूट करोगे तो इसका आ जाएगा 1/2, पॉजिटिव रूट लेना है, तो V2 विल बी 96, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं लाइक दिस। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होता है ये मैं आपको बता देता हूं। व्हेन देयर आर टू बॉडीज विच आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है, वो क्रॉस करने के बाद जब आपको गिवन हो, देखो T1 T2 क्या है ये समझना, आपको 4 क्वांटिटीज में से 3 क्वांटिटीज चाहिए, DI कल होगा, DI विल बी डन टुमारो। आपको इस फॉर्मूले में आपको एक वैल्यू मिसिंग होगी पर 3 तो चाहिए आपको, यू नीड वन ऑफ द स्पीड्स एटलीस्ट। और T2 T1 क्या है, T2 का मतलब है टाइम टेकन, बात समझो मैं लिख देता हूं, T2 क्या है, T2 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द मीटिंग पॉइंट, आफ्टर द मीटिंग पॉइंट टू रीच एट द अदर एंड, ये है, ठीक है। यस, सो यस दिस फॉर्मूला, बट यू शुड नो कि ये कहां पे अप्लाई करना है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, बट हाँ इससे डायरेक्टली निकल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, विच इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे हम आ जाते हैं, ठीक है जी। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेस ऑफ दिस चैप्टर इज परसेंटेज। काफी हद तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट परसेंटेज चैप्टर पे ही बेस्ड है, मतलब दैट इज द फाउंडेशन। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट, अगर परसेंटेज चैप्टर आपका क्लियर नहीं है देन यू कैन फाइंड सम डिफिकल्टी इन दिस चैप्टर ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ओके, starting with the second question, by selling 160 calculators an electronic dealer makes a profit equal to the cost of 30 calculators, find the profit percentage। जल्दी से बता देंगे, find the profit percentage। we will do tomorrow DI, so tomorrow's class is only for DI, exclusively for DI, सिर्फ DI ही करने वाले हैं हम, ठीक है, because DI has the good weightage, so it demands a separate session। okay, by selling 160 calculators, yes, question is clear, an electronic dealer, it's like SP of 160 kilometers. By selling 160 kilometers, what is the profit? SP minus CP of 160 kilometers. This profit is equal to CP of 30 calculators, isn't it? So it's like SP of 160 calculators is equal to CP of 190, and you take it to the other side. So CP upon SP becomes, CP upon SP becomes 16 by 19. What is the profit percentage? SP minus CP upon CP into 100, 19 minus 16 upon 16 into 100. So 3 by 16 into 100. Yes, so what will be this value? Now see how percentage chapter will be helpful, as I told you. If you know that 1 by 8 is equal to 12.5%, then you should also know that 1 by 16 will be half, 6.25%, and we have to do 3 by 16. So into 3, 18.75. What is 75? It's like 18 3 by 4, isn't it? So option A. This is how the percentage chapter helps you in arriving at the answer quickly. मतलब आप normally calculate करोगे तो time लग जाएगा. But if you know that 1 by 16 is 6.25, then you can directly multiply by 3. Very easy. Yes? The class is at 6 p.m. only. All my classes are at 6 p.m. Okay? Abhishek? Yes, question number 3. Madan Lal bought 2 quintals of dal. Now what is 1 quintal? You should know some basic units, that 1 ton is 1000 kg, 1 quintal is 100 kg. You should know this. ठीक है, मतलब not very technical or very advanced, but basic, like 1 kg is equal to 1000 gram. So quintal is also important, ton, ठीक है. 1 quintal is equal to 100 kg. So they're talking about 2 quintals, so they're talking about 200 kg. Madan Lal bought 200 kg. And he has bought it for 4600. This is bought for 4600. So what is the per kg cost? 4600 divided by 200. So 23 per kg is the cost price. 23 per kg is the cost price for this Madan Lal. Okay. Now it says
ड्यू टू द डैम कंडीशन ही हैड टू सेल इट ऑफ, उसको पूरा का पूरा बेचना पड़ गया ड्यू टू डैम कंडीशन. ही इनकर्ड अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30. ओके, लॉस उसको हुआ है, बात समझना, लॉस हुआ है. ही सोल्ड द इंटायर. तो इट्स लाइक सीपी ऑफ दिस 200 minus selling price of this 200 is equal to selling price of 30 kg. Can you form this equation? So it's like 200 CP is equal to 230 SP. Now you have to find selling price. See, you already know the cost price is 23. You can substitute it here. So it will be 4600 divided by 2300 is equal to SP. So this is 46. Yes, this is 46,000. This is 230, not 2300. I have taken 10 extra. 1 second. 230. So 1010 cancel. So SP comes out to be 20 per kg. Selling price per kg would be 20. Yes or no? So Reva, Shruti, Harshita, yes. You guys have answered the question correctly. बहुत बढ़िया. Rohan, yes. Amit, absolutely correct. Very good. Moving on, question number 5. Quickly. Moving on, question 5. We'll do this question when after this question we'll take a small break of 5 minutes. Fresh grapes contain 90% water by weight, whereas dry grapes contain 20% water by weight. Ram buys 64 kg of fresh grapes for 160. At what price should Ram sell the dry grapes to get a profit of 20%? Yes, try this out, guys. Try this out. Try this out. हाँ, so we have done that only. पंकज वही किया हमने 4600 divided by 230. That same thing I have done. Yes. ओके, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. इट्स लाइक सी राम बॉट 64 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स. नाउ हाउ मच वाटर इज देयर, हाउ मच पल्प इज देयर? तो पल्प इज 10%, water is 90%, so 6.4 would be pulp. And what will be the water? 64 minus 6.4, so 47.6 will be the water content. I think this is very clear to all of us. Now it says Ram buys 64 kg of, अच्छा ये तो हो गया, and he has bought it for rupees 160. That is also something given to you. ठीक है. अच्छा बोल रहे हैं कि ड्राई ग्रेप्स. नाउ अंडरस्टैंड, इन ड्राई ग्रेप्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर एंड पल्प? वाटर इज 20%, pulp is 80% in the dry grapes, which basically means over here that this is 80% and this is 80%. Try to understand. If 80% is 6.4, because 80% is pulp in dry grapes, so 80% unitary method is equal to 6.4 kg. 1% is equal to 6.4 divided by 80, and 100%. So how much dry grapes they have sold is equal to 6.4 into 80 into 100, 5 by 4. This will be 8 kg of dry grapes. But they are saying at what price they should sell to get a profit. Now understand what is the per kg. What is the cost price? 160 divided by 64. So it's like 16 into 4, 10 by 4. It's like 2.5. Okay, that is the per kg cost price. Now if you want to make a profit of 20%, so into 1.2. 1.2 is basically 6 by 5. So 0.5. So selling price would be 3. So 8 into 3 will give you 24. Say they should sell at 24 rupees. So this 16 kg, no, this 8 kg of dry grapes should be sold at 24 rupees to get a profit of 20%. Yes? You can have a look at the calculations. If it's not very clear, you can just have a look at my calculations.
Okay, you might understand. So we'll take a small 5-minute break. You guys can also take a small break if you want. Else, I'll leave you with one question. If you want to do till I come, question 7, you can try this out. I'll be back in 5 minutes.
So anybody done with this question 7th? Amit says option number A, 16 1 by 4 or 16 3 by 4. It's 3 by 4 and 1 by 14. So these are different options. You can give 3 hours, 2 hours even daily. See, first of all, you should work on quant and reasoning, because current affairs are more important for the last 6 months. So if you're starting for this exam, you should first work on quant, reasoning, English, management, finance, the static subjects first. Question 7. Okay, let's try this out. A certain alloy is made of 2 types of metals. Okay, A and B. Metal A and B account for 35 and 50% of the total cost. Remaining 15% is manufacturing cost. Assuming the cost to be 100, let's say. Metal A would be 35 rupees. This will be 50, and fixed cost is constant. This will not change as per the question. Now alloy is sold at 30% above the cost price. Let's say it is sold at 130. See, I am taking some hypothetical values because the question is in percentage. मतलब जो पूछा भी जा रहा है वो percentage पूछा जा रहा है, इसलिए हम कर सकते हैं. But if there would have been some absolute value, then we would have to take some variable. Okay, always remember. Now find the percentage. Metal A and metal B become 20%, 10% more costly. So this becomes 35 into 1.2. 20% more, this becomes 42, and 10% more, this becomes 55. Now this will remain 15. There is no change. So what is the total cost now? This is 55 and 15. This is 70. 70 plus 42, 112. So what they are asking is profit. So profit will be selling price minus cost price upon cost price into 100. So this will be 18 by 112 into 100. Now what is this fraction 18 by 112? If you divide it by 2, this will be 9 by 56. But if you notice, they have given you the answer in, matlab they have simplified the entire thing actually. Now 9 by 56, this will be on the table of 4, 14 and 25. So 225 divided by 14. So you can find it in a mixed fraction also, like 14 into 1 is 14, then carry forward 85, 14 into 6 is 84. So 16 1 by 14 should be the answer, option number B. Yes. So if you have done any mistake in the calculation, you can check. It's 225 by 14, which when converted into a mixed fraction becomes 16 1 by 14 in a mixed fraction. Okay. All right. Moving on to let's discuss now question number 10. Now through question number 10, I want to explain some concept. That is why. It's like 2 bicycles were sold for 3990, each gaining 5% on one and losing 5%. अच्छा, एक पे 5% gain है, एक पे loss है. What is the gain or loss percentage? So the objective of doing it is कि इसके लिए फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. जब सेम परसेंटेज है, 5 ही है ना, गेन का भी लॉस का भी, तो लॉस ही होता है और उसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बाय 100. तो हियर इट्स 5, तो 5 स्क्वायर बाय 100, सो 25 बाय 100 विच इज 0.25. तो 0.25% का लॉस होगा. मतलब दिस इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट. दिस इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट. एंड इवन इफ यू वांट टू डू इट, इफ यू वांट टू चेक, आप चेक भी कर सकते हैं. सिंपल एग्जांपल लेके हम चेक कर सकते हैं. मान लीजिए 100 है, 5% का गेन है और 5%, अच्छा 2 है, एक पे लेट्स से
गेन है 5% का, ठीक है, ठीक है, एक पे गेन है, एक पे लॉस है। अच्छा, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। यहाँ पे जो पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस इज सेम, ठीक है। तो कुछ भी हम मतलब रैंडम वैल्यू भी कुछ अज्यूम करके चेक कर सकते हैं, बट मैंने आपको डायरेक्टली ही इसका शॉर्टकट बताया है। बट यस, इफ यू ट्राई वांट टू डू दिस, कि फॉर एग्जांपल दिस 3990 इस पे 5% का गेन हुआ है, सो दिस इज लाइक 100/105 अगर आपको इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। और जो एक और बाइसाइकिल है वो भी आपने 3990 में ही सेल करी है, बट उस पर लॉस हुआ है 5% का, तो इट्स लाइक 100/95। तो यहां से आपको दोनों के सीपीज मिल जाएंगे अगर आपको पूरा सॉल्व करके चेक करना है, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्चुअली यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे फिर। अ पब्लिशर प्रिंटेड 2000 कॉपीज ऑफ अ बुक एट अ कॉस्ट ऑफ 70,000, ठीक है। He distributed 400 copies free as specimen copies. He gave 30% discount on marked price of each book, which is 75. What is the gain or loss percent? What is the gain or loss percent? This is the question. Clear? Now, see, what is the cost price? So what we can do is, we have the total cost price as 70,000 here. Now, we can find the total selling price. Now he has given 400 for free for 1600 books. He has given. Now what is the mark price of each book? It's 75 and he's giving 30% discount. So into 70/100. Yes or no? So if you solve this, these two zeros we can cancel them out. So it's now 16 into 75 into 70. And I have to deduct 70,000 and divide by 70,000 into 100. That would be my gain or loss percentage. Options, if I have to show you the options now, 20% loss, 20% gain. Yes. What is the answer? Question number 12 we are doing, everyone. So my point here is, can you simplify your calculation by any means? Can you think of some way of simplifying this calculation? देखो कॉमन निकाल सकते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज, वी कैन टेक लेट्स से 7, तो एक कॉमन आ ही जाएगा दोनों में से। इसके अलावा एक 5 भी निकल जाएगा, ठीक है। 5 के अलावा अगर मैं देखूं तो 35, तो और भी हमारे पास चीजें, जैसे मान लीजिए 4 भी निकल जाएगा, एक और भी कॉमन निकल जाएगा, बट एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो दिस इज लाइक 4, एक 4 कॉमन निकाल लिया है, एक 15 हो गया, ठीक है। और ये कितना है, 35 इंटू 4 कितना होता है, 140, तो ये 500 आ गया। ये मैंने कॉमन निकाल लिया 70,000, तो कितना हो गया 140, और अंदर क्या आ गया 6, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास इट्स लाइक देखो 5 कॉमन निकाला है हमने एक, और अच्छा एक 0 कम ले, वी हैव टेकन 1 0 लेस, ये गलती करी है बस। तो इट्स लाइक 100 आ जाएगा अंदर, ठीक है। तो 14000 डिवाइड बाय 70,000, 3 0 कैंसिल, 1/5, 1/5 कितना होता है 20%। तो 20% गेन हो गया, 20% गेन हो गया। कृति गॉट इट राइट, रोहन, रेवा 20%। देखो श्रेया क्या करा हमने क्या करा है हमने, देखो दिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो हम अभी इन सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अलावा कोर्स में आपको जो क्यूआरई के टेस्ट गिवन है, बोनस टेस्ट गिवन है, मॉक टेस्ट, फिर फुल लेंथ मॉक्स हैं, हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, नथिंग आउटसाइड यू नीड टू डू, है ना। ओके, करा क्या है हमने, सी कॉस्ट प्राइस वाज 70,000, तो मैंने क्या करा, I've just done, what I've done is सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है ना, तो वही कैलकुलेट करा है। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन समथिंग कॉमन, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए बस मैंने कॉमन ले लिया। आप नॉर्मली भी इसको वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको एक तरीका दिखा रहा हूं कि कई बार हम चीजें कॉमन बाहर निकाल के भी कर सकते हैं। ओके, एक बार
हम लोग देखेंगे जल्दी से क्वेश्चन 14। रीजन बीइंग क्वेश्चन 14 के थ्रू आई वांट टू एक्सप्लेन सम कॉन्सेप्ट, बिकॉज इसमें डाउट होता है कमीशन वाले क्वेश्चन में, आफ्टर कमीशन बिफोर कमीशन, सर व्हाट इज दिस मीनिंग, आफ्टर बिफोर व्हाट इज दिस मीनिंग। I don't think you need to buy specifically because as I told you we are giving 10 full length mocks. इसके अलावा there are 10 also other practice sets of QRE. They are more than sufficient. Okay. Question 14. C 48,000 is the answer you are getting. See how to do this question. I want to explain certain thing here. Like क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वर्किंग पार्टनर गेट्स 20% एज द कमीशन एंड दिस कमीशन इज ऑन द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, इट्स नॉट ऑन द प्रॉफिट, इट्स प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, so this 20% is actually calculated on profit minus commission. Yes or no? So it's like 20%. Okay, now profit is given to you as, the total profit is not given, assume it to be P, commission we know is 8,000. So 20% of this is 8,000. Like this is the equation. If you can form this equation, then you can find P. We need total profit only, value of P only. So this is like 1 by 5 into P minus 8,000 is equal to 8,000. P minus 8,000, this 5 will go to the other side, is equal to 40,000. So total profit is 48,000. 48,000, not 4,800, 48,000. Okay. Yes. All right. So this is, yes. Next question number 18. I will show you the other options. First you go through this question, then I will show you the, or let me write down the other options. 2010, 2012, 2010, 2012. I'll just write down 20 and 10, 20 and 12. So two successive, option C, D, E, 20 and 10, and two successive discounts of 20 and 12. And one single discount of 20%. So these are the 5 options. These are the 5 options. Good question, अच्छा question है, try करेंगे इसको. Katrina goes to a shop to purchase a doll priced, ठीक है, cost price is 400. She is offered 4 discount options by the shopkeeper. Which of these options should she opt to gain maximum advantage? Okay, in which of these options she'll have the maximum advantage? Yes, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है श्रेया, एब्सोल्युटली, बट एक्सप्लेन, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उसको समझे भी कि मतलब क्या है उसका. ठीक है, सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30. देखो आप बस डिस्काउंट का अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं या परसेंटेज में ही रख सकते हैं. इसका इजी तरीका क्या है, ऑप्शन ए तो 30% ही है, जस्ट लीव इट. ऑप्शन बी से देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है A% प्लस B% माइनस, मतलब परसेंट तो है ही, वो परसेंट को आप इग्नोर करो, चाहे सिर्फ वैल्यू ले लो, A प्लस B माइनस AB बाय 100, ये फॉर्मूला होता है. तो ऑप्शन बी को अगर मैं चेक करूं, 15 प्लस 15 माइनस 15 इंटू 15 बाय 100. देखो इसमें ना अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, ऑप्शन एलिमिनेट करो, पूरा सॉल्व मत करो, थोड़ा सा स्मार्ट चलेंगे. जहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है वहां से बाय करने का फायदा है. डेफिनेटली ये 30 से कम आएगा क्योंकि कुछ माइनस कर रहे हो, तो ऑप्शन बी हट गया, बिकॉज ऑप्शन ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, तो बी तो हट गया. अच्छा, ये ऑप्शन ई भी हटाना बहुत आसान है, 20 तो कम ही है, 30 से भी कम है, हटा दो. अच्छा, ऑप्शन सी और डी को चेक कर लेते हैं एक बार. 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100. अगेन अगर आप देखोगे 30 में से कुछ माइनस हो रहा है, ये भी 30 से कम होगा, ए से कम होगा, तो आंसर ए होगा या डी होगा, ए होगा या फिर डी होगा. ई कैसे लग रहा है, ई में तो मिनिमम डिस्काउंट मिल रहा है, सिर्फ 20% का सिंगल डिस्काउंट मिल रहा है आपको, सबसे कम है, सबसे मिनिमम एडवांटेज है वो, आपसे मैक्सिमम पूछ रहे हैं, वो तो मिनिमम का आंसर हो जाएगा. अच्छा, अब 20 और 12, 20 प्लस 12 माइनस 20 इंटू 12 बाई 100, ये कितना होगा, 32 माइनस ये कितना है, 20 इंटू 12 होगा 24, तो 2.4, ये भी 30 से कम हो जाएगा, 30 से कम हो जाएगा ये. तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% यहीं पे मैक्सिमम मिल रहा है, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं आपकी 30 से कम आ रही हैं. आप चेक करो ये कितना आ जाएगा, 29.6 आएगा, ये भी एवरीथिंग इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 30 ना, तो ए ही होगा. यस और नो? अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन. श्रेया
हैज आंसर्ड इट करेक्टली. ओके ओके, युग्मिता, यस. रोहन. हाँ देखो, मोर देन टू भी हो सकता है. किसका क्वेश्चन है? रेवा. देखो मान लीजिए वो बोलते हैं 10%, फिर 20%, फिर 30%, कुछ ऐसा है. और उसका कॉस्ट प्राइस, उसका मार्क्ड प्राइस है 1000. तो उसमें आप कैसे निकालते हैं सेलिंग प्राइस? इंटू 90/100, इंटू 80/100, नॉर्मली कर सकते हैं, इंटू 70/100. तीन चार कुछ भी हो सकता है, ठीक है. यस. ऑल राइट, ऑल राइट, मूविंग ऑन. आगे चलते हैं. तो लेट मी डिस्कस. लेट मी डिस्कस. ओके, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन 22 पे आ जाएंगे एक बार जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 22. A dishonest trader marks up his goods by 80% and gives discount of 25%. Beside, he gets 20% more amount per kg from the wholesaler and sells 10% less. What is the overall profit percentage? What is the overall profit percentage? इसको ट्राई करेंगे एक बार. देखो अगेन इसके लिए मैं आपको तरीका ये बताऊंगा. मान लेते हैं 100 उसका सीपी है. एमपी कितना हो जाएगा? 80% मोर, 180. एसपी कितना हो जाएगा? 180 को मल्टीप्लाई कर दोगे 75/100 से, डिस्काउंट मतलब 3/4 से बेसिकली, तो 135 उसका एसपी हो जाएगा. तो ये तीन वैल्यूज आ गई. लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. अब यहां पे लिखा है ही गेट्स 20% मोर अमाउंट पर केजी फ्रॉम द होलसेलर. जब वो परचेज कर रहा है, बात समझना, जब वो परचेज कर रहा है तो ऐसा समझो आप कि लेट्स से ये हमने 100 केजी का निकाला था, बट एक्चुअली अब मान लेते हैं वो 120 केजी परचेज कर रहा है, चीटिंग कर रहा है खरीदते वक्त. तो 120 किलो खरीद रहा है वो 100 रुपए में, और बेचते वक्त भी वो चीटिंग कर रहा है, 10% लेस बेच रहा है, मतलब 90 केजी ही सेल कर रहा है 135 में. 135 उसका सेलिंग प्राइस है. तो अभी हम इसको कंपेयर, देखो हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, बट क्वांटिटीज आर डिफरेंट. वी कैन ओनली मेक द कंपैरिजन व्हेन बोथ द क्वांटिटीज बिकम सेम. कंपैरिजन इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू मेक द क्वांटिटीज सेम, तभी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं. पहली चीज तो आपको ये समझनी चाहिए. तो इसके दो तरीके हैं करने के, या तो दोनों को 100 केजीज पे ले आओ, दोनों की वैल्यू 100 केजीज पे ले आओ, फिर आप कंपेयर कर सकते हो. अदर वे कुड बी कि इसको 120 पे ले जाओ, है ना. तो ये 1 केजी का सेलिंग प्राइस हो गया 135/90, और 120 का कितना हो गया 139/90 इंटू 120, सो 3/4 हो गया ये, और 135 है, ओके 5 है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 45, तो ये हो गया 180. तो 180 हो गया इसका 120 का सेलिंग प्राइस. तो 180 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो 80% का प्रॉफिट उसका हो जाएगा. एवरीबॉडी इज गेटिंग द सेम और नॉट? देखो अगर इसको 100 पे भी लेके आएंगे ना, एक और तरीके से आपको करके दिखा देता हूं कि 120 केजी उसको 100 रुपीज का कॉस्ट करा है, और 90 केजी उसने 135 में बेचा है. तो 100 किलो का कॉस्ट कितना होगा उसके लिए? 100/120 इंटू 100. और यहाँ पे 100 किलो का कितना उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा? 135/90 इंटू 100. अच्छा ये हो गया 5/6, तो ये हो गया 500/6. अच्छा ये कितना हो गया? 9/10, ये हो गया आपका 15, ये हो गया 150. अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो 6 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 500 अपॉन 500, तो 400 अपॉन 500. मतलब मेथड तो आप कोई भी यूज करो आंसर तो सेम ही आएगा, है ना. कोई भी यूज करो मेथड, आंसर तो यहां से भी आपके पास 80% ही आने वाला है. यस और नो? देख लो मैंने क्या करा है इसमें.
व्हाट आई हैव डन इज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं. यस, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन बिकॉज ये डिसऑनेस्ट सेलर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें जनरली प्रॉब्लम होती है समझने में. देखो, इसमें दे रखा था कि डिसऑनर, मैंने अज्यूम कर लिया सबसे पहले सीपी को 100. अब यहाँ पे ही मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 80%, तो एमपी हो गया 180. सेलिंग प्राइस कैसे निकाला? डिस्काउंट माइनस कर दिया, सेलिंग प्राइस इज 135. But he has done cheating at the time of buying also, at the time of selling also. So at the time of purchase, he purchased 20% extra. तो यहाँ पे एक चीज मैंने अज्यूम ये करा है that I have assumed that 100 kg is costing 100 rupees. 1 kg cost is 1 rupee. That is my assumption in this question. Now 120 kg he has bought for 100 rupees. He has bought 20% extra. And while selling, he has sold 10% less. So 100 minus 10%, 90 kg. And the selling price is 135. Yes or no? Now you have now multiple ways to proceed. You have to make the quantity same. तो दोनों की क्वांटिटी को या तो 90-90 बना दो या 120-120 बना सकते हैं, तभी आप उनके प्राइस को कंपेयर कर सकते हो. अभी क्वांटिटी डिफरेंट है तो आप ये नहीं बोल सकते कि 35% का प्रॉफिट है. नहीं, क्वांटिटीज को सेम करना पड़ेगा पहले, या फिर दोनों को 100-100 में कन्वर्ट कर दो कि अगर 120 kg इतना कॉस्ट कर रहा है 100 रुपीज, तो 100 kg कितना कॉस्ट करेगा. और अगर 90 kg का सेलिंग प्राइस 135 है तो 100 kg का सेलिंग प्राइस कितना होगा, एंड देन यू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज. ठीक है जी, तो ये हमने कर लिया है. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, मतलब नाउ आई थिंक वी कैन प्रोसीड टू पार्टनरशिप चैप्टर. The third chapter for today is partnership. ठीक है, chapter of partnership. Yes or no? Yes, everyone. We'll start with this question. Question number 2. Okay. Question number 2. Question number 2. It's like A, B, and C started a business. तीन लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है where their initial capital was in the ratio 4:5:6. At the end of 8 months, A invested an amount such that his total capital became half to C's initial capital. If the annual profit is 7,500, then what is the total profit? What is the total profit? Yes or no? तो कैपिटल का रेशियो है 4:5:6. तो आप अज्यूम कर सकते हैं 4x, 5x एंड 6x. दिस वी कैन डू. यस, एक्चुअली अगर हम x के टर्म्स में नहीं भी लेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें प्रॉफिट का रेशियो चाहिए. वी नीड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इस चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट है, देयर इज वन कॉन्सेप्ट, एंड दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन. इस चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय टाइम का रेशियो, इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलता है. ये एक इसका मेन कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का, जिस पे ये बेस्ड है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में. लेकिन इसी को समझने में गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, इसको नहीं समझते हैं कि ये यहाँ पे रेशियो की बात होती है. हम कई बार समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है. नहीं, रेशियो मिलता है हमेशा. वी गेट ओनली द रेशियो. तो 4, 5, 6. अच्छा, एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, 8 महीने के बाद सी ने कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है. एक बात समझना, लेकिन इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करा है. इनकी तो 12 मंथ्स के लिए इंटू 12, तो ये तो हो गया 60 और ये तो हो गया 72. लेकिन ए ने क्या करा है 8 महीने बाद, तो 4 × 8 पहले हो गया 32. उसके बाद उसने अपनी कैपिटल को क्या करा है, इन्वेस्टेड इन अमाउंट, उसकी कैपिटल सी से हाफ हो जाए, मतलब उसकी कैपिटल अब 4 से 3 हो गई है. 6 का हाफ कितना है? 6 का हाफ है 3, तो उसकी कैपिटल हो गई 3 फॉर द रिमेनिंग 4 मंथ्स. तो 3 × 4 कितना हो गया 12. तो 32 + 12 कितना हो गया 44. यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? टेल मी गाइस, क्लियर और नॉट? नाउ दे आर आस्किंग यू एनुअल प्रॉफिट बी का. देखो, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप. 11 4 से डिवाइड करोगे, 15 एंड 18. तो दिस 15 रेशियो, दिस इज इक्वल टू 7,500. तो आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है. टोटल कितना है? टोटल है 11 + 15 + 18. दिस इज
33, 44 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। बात समझो, अगर 15 रेशियो 7500 के बराबर है तो 1 रेशियो 7500 बाय 15 के बराबर है, और 44 रेशियो की वैल्यू निकालनी है आपको, दैट वुड बी 7500 बाय 15 इंटू 44, दिस इज 500 इंटू 44, सो 22,000, ऑप्शन नंबर ए 22,000 is the total profit. Yes or no? Yes, 22,000. Okay. Moving on to next question, question number 4. X, Y and Z enter into a partnership and their shares are in the ratio this. After 2 months, X withdraws half of the capital, this and this. So try this out. Question 4th. Question 2nd का आंसर A है ना? 22,000 श्रुति, रेवा, नहीं हाफ नहीं, टोटल हाफ नहीं था, कैपिटल की बात कर रहे थे वहां पे। उसकी कैपिटल थी 6 यूनिट्स, तो इसकी 6 डिवाइड बाय 2 3 यूनिट्स हो गई आफ्टर 8 मंथ्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा अब देखो, कैपिटल का रेशियो दे रखा है आपको, नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है, यू आर गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दिस क्वेश्चन, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, तो इसको अभी इट्स द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, वी नीड टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, तो वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, तो एलसीएम ऑफ 4, 3 and 2 will be 12, so this will be 6 by 12, 1 by 3 will be 4 by 12, this will be, so their profit sharing ratio comes out to be 6:4:3, this is their profit sharing ratio. But what is the profit sharing ratio? It's the product of capital into time. Now they are asking you, X withdraws half of his capital and after 10 months a profit of 420 is divided. Acha no, actually this is their capital only, so there is language is confusing. देखो बात समझना, their shares are in the ratio, मतलब amount of capital, share of their capital is given to you. This is not profit sharing, this is their capital. So their capital are 6, 4 and 3, and after 2 months X withdraws half of his capital. बात समझना, after 2 months, तो 2 महीने तक तो उसकी कैपिटल यही रही, 2 महीने के बाद है ना उसने अपनी आधी कैपिटल विड्रॉ कर ली है, नई कैपिटल उसकी हो गई 6 डिवाइड बाय 2 3 फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ्स, दिस इज 30, बट द अदर 2 पीपल देयर कैपिटल इज नॉट चेंज, so 4 into 12 is 48, 3 into 12 is 36, and this 2, 30 and 12 becomes 42. Now they are asking you what is the share of Y, total profit. अच्छा इसको थोड़ा simplify भी कर सकते हो, you can divide them by 6 into 7, 6 into 8, 6 into 6. Share of Y पूछा है 8 upon 7 plus 8 plus 6 into 420. This is 8 upon, this is what, 21 into 420, this is 20, so 160, option number C is the share of Y. Yes everyone, समझ में आ रहा है? चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप, देखो ये स्कोरिंग चैप्टर होता है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपको एक बार एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, ओनली वन कॉन्सेप्ट इज देयर मेजरली, बाकी क्वेश्चन के वेरिएशंस हो सकते हैं, दैट इज डिफरेंट। ओके, लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस ट्राई, इसको पढ़ो, इसका रिमेनिंग पार्ट मैं आपको शो करता हूं, पहले इतना पढ़ो। M started a business with 25,000 and joined after 4 months with 20,000, 4 महीने बाद ज्वाइन करा है N ने, ठीक है। आफ्टर 2 more months M withdrew 10,000, मतलब 6 महीने तक तो उसका यही रहा कैपिटल, उसके बाद उसने विड्रू कर लिया 10,000, तो उसकी कैपिटल बची 15,000। अच्छा अब इसने 4 महीने बाद ज्वाइन किया था, देखो टाइमलाइन का बहुत ध्यान रखना, टाइमलाइन में गलती मत करना।
ही ज्वाइंड आफ्टर 4 months, और उसके भी 2 महीने बाद, तो मतलब 6 महीने हो गए ना टोटल, 4 महीने बाद इसने ज्वाइन किया, उसके भी 2 महीने, तो ये 6 यहां से, यहां पे 6 इसलिए आया है, ठीक है। तो 6 महीने, 6 months, हाफ ईयर इज ओवर, 2 more months लेटर, 2 और खत्म, मतलब 8 महीने खत्म हो गए अब। तो 8 महीने खत्म हो गए, और उसमें से भी ये तो 4 महीने बाद आया था, तो 4 महीने तक तो इसका ये कैपिटल रहा। उसके बाद इसने 10,000 ये और ले आया, इसमें 10,000 ऐड कर दो, 30,000। अच्छा, टाइम ये आया था, ये कब आया था, ये 4 महीने बाद आया था, और 4 इसने यहाँ यूज कर लिए, इसके बचे 4, ये इस क्वेश्चन में अभी हम पढ़ते हैं 1 साल की बात हो रही है, और इसके लिए बचे 6 महीने, 6 यहाँ पे यूटिलाइज हो गए, 6 यहाँ पे, ये 12 महीने का पैसा इसका लगा है, इसका पैसा 8 महीने ही लगा है, बिकॉज ये ही हैज कम आफ्टर 4 months। दिस इज लाइक 1,50,000। तो आई एम फाइंडिंग आउट कैपिटल इनटू टाइम रेशियो, अभी बताता हूँ रेशियो, ये रेशियो निकलेगा, ध्यान से समझना। दिस इज 80,000, एंड दिस इज फॉर द रिमेनिंग 6 months 90,000, and this is 1,20,000. So what is there? See, what is this? This is capital into time. इसका टोटल कितना हो गया? 2,40,000. इसका टोटल कितना हो गया? 2 लाख। Now question बढ़ते हैं, what should be the ratio in which they should share the profit? So this is their profit sharing ratio. If you simply, अब ये इनको प्लस करके जो आपको वैल्यूज मिल रही हैं, these are ratios, मतलब these are ratios. This is not an absolute value. So this is zeros and zeros will get cancelled out. 4 zeros will get cancelled out. So 24 is to 20 on the table of 4. 4 into 6, 4 into 5. So this is their profit sharing ratio. Option number D would be the right answer. Yes, everyone clear? समझ में आ गया? तो ये इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, कैपिटल इनटू टाइम आपको देता है प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है, बिटवीन 2 people, 3 people, 4 people, जितने भी लोग हैं। Like, have a look at this question. Question number 9. Question number 9. Have a look at this once. M and N invested in a business in which M invests 250 more than N. हाँ, विड्रॉवल किया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा तो था। उसकी कैपिटल कम हो गई है, कम हुई थी, बिल्कुल कम हुई थी, यस। His capital became half of the capital of C, है ना, तो वो इफेक्टिवली कमी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, M and N invested in a business in which M invested 250 more than N. तो अगर N ने X इन्वेस्ट सॉरी तो अगर N ने X इन्वेस्ट करा है तो M ने 250 प्लस X इन्वेस्ट करा है। He invested for 6 months, M invested for 4 months. So what is their profit ratio? अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे, 1000 plus 4x is to 6x. मतलब क्या बोल रहे हैं, if M get 200 more than N out of a total profit of 1000, बात समझना, ये जो रेशियो है प्रॉफिट का, ये रेशियो कितना है, ये बोल रहे हैं 1000 में से 2 लोग हैं, ठीक है, M को 200 ज्यादा मिले हैं N से। इसका सिंपल तरीका आपको बताऊं, जब भी ऐसा कुछ गिवन होता है, इसका हाफ कर लो। इसका हाफ कितना है, 500। तो एक में 200 प्लस कर दो, एक में 200 माइनस कर दो, 500 प्लस, अच्छा वेट सॉरी, तो इसमें पहले आप 200 माइनस करो। इसका तरीका क्या है, 200 का डिफरेंस है ना, 200 माइनस करो, कितना होगा, 200 माइनस करोगे 800, 800 डिवाइड बाय 2 400, तो एक का हो गया, लोअर वाले का हो गया 400, हायर वाले का हो गया 600। मतलब ये शॉर्टकट है करने का, वैसे भी आप निकाल सकते हैं इसको इक्वेशन से भी। तो इनका हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, M और N का 600 और 400, मतलब ये 3:2 हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस विल बी 2000 प्लस 8x इज इक्वल टू 18x, सो 10x इज इक्वल टू 2000, x इज इक्वल टू 200, x की वैल्यू आ गई 200। अब आपसे पूछा क्या है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो बिजनेस में कितना पैसा लगा है, 250 प्लस x दोनों का ऐड करोगे तो 250 प्लस x, तो 250 प्लस 2x, तो 250 प्लस 2 इंटू 200, तो 250 प्लस 400 इज इक्वल टू 650। बिजनेस में पैसा कितना लगा है, 650, ऑप्शन नंबर बी
इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th। आई विल शो यू द रिमेनिंग पार्ट, पहले इतना रीड कर लो। पी क्यू एंड आर, P, Q and R are the partners in a business. P whose money has been used for 4 months. So P, Q and R are a partners in a business. Yes or no? P whose money has been used for 4 months claims, अच्छा प्रॉफिट कितना क्लेम कर रहे हैं? प्रॉफिट हो गया, टाइम हो गया, और एक आपका हो गया कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा P ने क्लेम करा 1/8 प्रॉफिट। नाउ Q whose money has been used for 6 months claim 1/3 of the profit. R has invested 1560 for 8 months. मतलब जो भी गिवन है मैंने वो लिखा है अभी, वट एवर इज गिवन आई हैव जस्ट रिटन दैट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ आर। आपको निकालना क्या है कि P और Q ने कितना कंट्रीब्यूट करा है, ये आपको, दिस इज समथिंग यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी क्लियरली डिकोडेड इन फ्रंट ऑफ यू। आई थिंक आप कर भी सकते हैं इसको, मैंने आप पूरा क्वेश्चन डिकोड कर दिया आपके सामने। देखो आर का प्रॉफिट शेयर कैसे निकाल सकते हो आप, टोटल 1 है, 1 माइनस 1/8 माइनस 1/3। ठीक है, तो एलसीएम ले लोगे 24 माइनस 3 माइनस 8/24, दैट इज इक्वल टू 13/24, 13/24। तो एक्चुअली अगर आप इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखोगे, दिस विल बी 3:8:13 जब आप इनको एलसीएम लेके कन्वर्ट कर लोगे, है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी कैपिटल्स पूछी जा रही है। एक मैंने आपको बात बताया है कि जैसे मान ले Q की कैपिटल इनटू Q का टाइम डिवाइड बाय R की कैपिटल इनटू R का टाइम, दिस इज इक्वल टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली यू कैन डू फॉर P, हाउ? P इंटू 4 अपॉन 1560 इंटू 8 इज इक्वल टू 3/13। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ये सबको क्लियर है व्हाट आई एम टेलिंग यू? यहां से आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी आपकी, जैसे दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 120। ठीक है जी, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 120 इंटू 8 डिवाइड बाई 3, दिस इज 40। तो दिस इज लाइक 320 इंटू 4, 1280। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। Q की वैल्यू, यहां से P की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस विल बी व्हाट, अगेन दिस विल बी 120। तो P will be 3 into 120 into 8 divided by 4, this is 30. This is 90 into 8 which is equal to 720. So option number A is the correct answer. B नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर A आंसर आएगा। प्लीज चेक करेंगे जो एरर किया है आपने कैलकुलेशंस में, प्लीज चेक एवरीवन। रोहन हैज आंसर्ड इट करेक्टली, आई थिंक टिल नाउ ओनली। यस और नो? क्लियर है? क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर? यस। तो अपनी कैलकुलेशंस चेक कर लेंगे। कैलकुलेशन ही ज्यादातर मैंने देखा कैलकुलेशन मिस्टेक ही होती है, समटाइम्स यस कंसेप्चुअल मिस्टेक भी होती है। दो ही टाइप की मिस्टेक होती है मेजरली, आपकी कैलकुलेशन में एरर हो सकता है या कंसेप्चुअल ही अंडरस्टैंडिंग आपकी वीक है, नहीं है, वो भी हो सकता है। बट इस चैप्टर में आपको कंसेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसको अच्छे से समझ लो so that you can score marks in this chapter. Question number 13. Question number 13. Yes, question number 1313. There are two person invest 1 lakh 15 and 1 lakh in a project. 1 lakh 15 and 1 lakh in a project. Okay. And they agree that 50% of the profit will be divided equally and the remaining is to be treated as interest on capital. If the first person gets 500 more than the second, what is the total profit? देखो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं मैं। अगेन मल्टीपल वेज है वैसे तो, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द क्वेश्चन।
अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने प्रॉफिट को x मान लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो 50% x/2, 50%। आप प्रॉफिट को 100x मान के भी कर सकते हैं, 100% मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि ये तो प्रॉफिट दोनों में बराबर बराबर डिवाइड हो गया। अच्छा, इनकी कैपिटल का रेशियो क्या है? ये रेशियो कितना आएगा? 23:20 आएगा ये रेशियो, है ना। 23:20 आएगा रेशियो। अब ये जो है ना, मतलब 50% प्रॉफिट तो हमने बराबर डिवाइड कर दिया, और बचा हुआ 50% उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। एक बात समझो, जो कैपिटल का रेशियो है उसी रेशियो में इंटरेस्ट मिलेगा, ये चीज समझना। तो x/2 पहले पर्सन को कितना मिलेगा? 23/43। ये कैसे निकाला है? टोटल है 43, और दूसरे का शेयर कितना है? x/2 इंटू 20/43। आपको देखना है कि अच्छा, डिफरेंस दे रखा है कि जो पहले पर्सन को कितना मिला है, x/4 प्लस दिस, ये कितना है? 23x/86 माइनस दूसरे पर्सन को कितना मिला है? x/4 प्लस 20x/86। ये जो डिफरेंस है ये बराबर है 500 के। दिस इज इक्वल टू 500 as per the question. Now this will get cancelled out. You will be left with 3x/86 is equal to 500. Yes or no? So यहां से आपको मिल जाएगी x की वैल्यू which you require. So x will be equal to 500/86 into divide by 3. Now obviously this calculation seems little complex maybe, but this is 86 into 5 is 430 followed by 2 zeros. अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी आप यूज कर सकते हो, मतलब आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू डू इट, लाइक 42,000 3 से डिवाइड होता है, प्लस 1,000 डिवाइड बाई 3, मतलब ये मेंटली होना चाहिए वैसे। ये हो गया 42,000 डिवाइड बाई 3 प्लस 1,000 डिवाइड बाई 3, दिस इज 14,000 एंड दिस इज 333.33। तो ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यू गेट द आंसर एज ऑप्शन नंबर डी, इजंट इट? These are some small calculation hacks. Now, they cumulatively can create a difference in the whole exam. Question number 21. Question number 21. A, B and C start a business and their investments are in the ratio 4:3:6. ABC. Okay. Both A and B start the business and C joins after 6 months. It was decided that C will get a monthly salary of 600. C's total salary came out to be 10%. What is the share of B? What is the... First of all, we'll calculate their profit sharing ratio. We'll find out their profit sharing ratio, isn't it? So these two people have invested for the entire year because it's after a year, as per the question, after a year, है ना? But this person only for 6 months. This is like, वैसे तो आपको जब रेशियो ही निकालना है तो आप यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हो, 2, दिस इज 2, दिस इज 1, ठीक है, 8, 6, 6, और सिंप्लीफाई हो जाएगा 4:3:3। ये 4:3:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नाउ एज पर द क्वेश्चन, सी इज also getting a monthly salary 600 and he has invested, he was there for 6 months, so his salary is 3,600. This is 10% of the annual profit, so annual profit must have been 36,000. Try to understand. And 3,600 is paid as salary, so what we are left with is 32,400. This is the remaining profit. एंड हमको बी का शेयर बताना है। बी का शेयर कितना है? यहां से देखोगे इट्स 3/10, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3/10, सो 324 इंटू 3 इज 972 प्लस 10, तो शेयर ऑफ बी इज ऑप्शन नंबर बी 9,720 रुपीज। श्रेया हैज गॉट इट करेक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट श्रेया, वेरी वेल डन, ऑप्शन नंबर बी। यस, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू गाइस? डन विद द क्वेश्चन? Moving on, question 22. P start a business with rupees 10,000. Q joins him after. So P has started with
a capital of 10,000. Q joins him after 2 months with 20% more investment. So 20% more basically here means 12,000. Yes or no? And after 2 months, R join with 40% less. So 40% less means 60% of this. 60% of 12,000 is 7,200. Now he has invested for the entire 12 months. He has invested for 10 months. He has invested for 8 months. Okay. Now as per the question, if the profit earned by them at the end of the year is equal to डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट ऑफ पी, तो पहले वो हम निकालते हैं, प्रॉफिट भी निकालते हैं, बट पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लेते हैं. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो एज आई टोल्ड यू, यू कैन हॉरिजॉन्टली यू कैन कैंसिल आउट, यू कैन 2 जीरोज होंगी एक्चुअली, 3 नहीं होंगी. यू कैन ओनली कैंसिल 2 जीरोज, 2 जीरोज, ठीक है ना. कैंसिल और भी चीजें होंगी, मतलब और भी आप जैसे ऑन द टेबल ऑफ 4 दिस इज 25, दिस इज 30 एंड दिस इज 18. और ये ऑन द टेबल ऑफ 2 6 5 4. अब मल्टीप्लाई करो ना, सिंप्लीफाई हो जाएगा. 25 इंटू 6 150, दिस इज अगेन 150, दिस इज 72. अभी और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 50 50 24, फर्दर 25 25 12. आपको क्या बताना है? क्यू का शेयर कितना है. अच्छा, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है आपका डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट ऑफ पी दैट इज 10,000 एंड 10 टाइम्स ऑफ आर. 10 टाइम्स ऑफ आर इज 72,000. तो डिफरेंस, तो प्रॉफिट है 62,000. इसमें आपको बताना है क्यू का शेयर. क्यू का शेयर है 25 आउट ऑफ 62. यस और नो? अच्छा, ये ट्वाइस है, इंटू 2 है, ये ट्वाइस लिखा है. प्रॉफिट इज ट्वाइस मैंने स्किप कर दिया. सो दिस इज 1,000 इंटू 2 इंटू 25. द शेयर इज 50,000. शेयर ऑफ क्यू इज, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है? 1,24,000 है ना. उसका शेयर, क्यू का शेयर है 50,000. यस एवरीवन, गेटिंग इट? आगे चलें फिर. ओके let us look at this question number 25. Question number 25. Sam and Suresh start a business with investment of 5,000 and 3,000 respectively. After 2 months, Sam takes out 2,000 from his capital. After 1 more month, Suresh takes out 2,000. Sunil joins with 6,000. At the end of 9 months, they earn a profit of this much. Which of the following is the share of each member? What is the share of each of the members? Yes. Can you do this question? Question 25. Everyone. So we have Sam, we have Suresh, and we have Sunil. Same concept, capital into time. Yes or no? So he starts a business with 5,000. He starts a business with 3,000. After 2 months, Sam takes out. So for 2 months, he has invested this amount. After 2 months, he takes out 2,000. So deduct 2,000. New capital is 3,000. After 1 more month, which means after 3 months, 2 plus 1, 3. After 3 months, Suresh takes out 2,000 minus 2,000. His capital becomes 1,000. And Sunil has joined with 6,000. But the timeline here is 9 months from the start. Time is not 1 year. Time is 9 months from the start. And he has joined after 3 months. So only 6 months. His capital would be only for 6 months. Now this 3,000 will be for 7 months, because 7 plus 2, 9 months should be the time period. This is for 6 months. Yes or no? 6 months. This is 21,000. This is 6,000. Now what is the total? 21 plus 10, 31,000. 9 plus, है ना? 9 plus 6, 15,000. And this is
36,000. Profit sharing ratio 31:15:36. What is the total profit? 4920. So can you find out each of their shares? Now what is the sum of all this? This is 51 plus 31, 82. So on the table of 82, this value is 60. So if you multiply all of them by 60, you will get the respective shares. Yes or no? This is 1860. This is 900. This is 2160, which is option number A as the correct answer, rightly answered by Afsana, Shreya, Shruti. Yes. So guys, this is it for today. We have done 3 chapters, that is time, speed and distance, including boats and streams. Then we discussed questions from profit, loss and discount. Profit, loss and discount. And then finally we have discussed questions from partnership. Now the floor is open for your doubts, queries, anything you want to ask, any query. We can take up some doubts before we close today's session. And as I've told you already, tomorrow we will be doing DI questions, only DI for 2 hours. Yes, you can ask me your doubts. Anyone, any doubt, any question, any query. Yes, there is no time limit, but you should not delay, because after every 2-3 days, 4 days, 3-4 days, we are uploading one mock. So then it will be piled up. So better to attempt. If your syllabus is covered, then you can attempt. Nushka, this is the QRA book in the course. So we cannot give the PDF of this. It's in the course only. So Pankaj, first of all, you can let me know if you are enrolled or not. So if you are enrolled, you have a lot of questions to practice from in the course. Okay, from the book also, from the practice questions after each chapter, there are questions. Then I told you we have bonus tests of QRE. Then questions being taught in the classes. A lot of questions are there. Krati, quadratic is, yes, you can do quadratic, Krati, you can do number series, you can do data interpretation, है ना? Then you can do topics like ratio, percentage, average. मतलब जो थोड़े से आसान है पहले उनको कवर कर लीजिए. Ishani, if you are forgetting the concept, see, for quant what you can do, daily give some time. So if the chapters which you have already covered, उनके भी questions आपको daily कुछ ना कुछ practice करने हैं, so that you don't lose the touch. थोड़े थोड़े करो, कम करते रहो, लेकिन at least 1 to 2 questions of the chapters which you have already covered, so that you don't forget and you understand them deeply. Harshita, so that is the gap in your knowledge. You have to revisit. You have to revisit those topics. Hai? Yes, Pankaj. So you have sufficient number of questions, as I told you, from the book, from the practice questions after each chapter, and even in the lecture PDFs in the course. That's a good amount of questions you have. Shreya, sectional, जैसे मैंने आपको बताया, there are 10 QRE bonus tests. So actually there are 3 sections, but you can attempt them like they are sectional test only. You can, if you want to only attempt the quant section, you can do that. If you want, you can only attempt the reasoning section out of it. You can use them like sectional test only. I'm talking about QRE bonus tests, not the full length test, the QRE bonus test.
Yes, Pankaj, you would have got access to everything. Quant course, reasoning course, test series course is different. When you log in, you see different courses in your portal. You see the course of crash course, then you see the course of quant, you see the course of ebooks. बहुत सारे courses दिखते हैं आपको, ठीक है. If your target is 2026, Ashutosh, you have a lot of time. So your first target should be to cover the syllabus comprehensively. पहले सारे चैप्टर्स जो भी हैं आपके क्वांट रीजनिंग के, इंग्लिश के, सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं प्रॉपर्ली. दैट इज योर फर्स्ट टारगेट. Then you work on speed. First is the conceptual understanding, then you work on speed. But first target should be to fill your gaps in your knowledge. If there are any gaps in your knowledge, you have to fill them. Okay. So Ashutosh, you can follow the 12-month plan because you are aiming for next year. You can follow the 12-month study plan given in the course. हाँ, जो पीडीएफ में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है पीआईबी की, मैं आपको बताता हूँ. यू हैव टू ओपन इट विद पीडीएफ रीडर लाइक एक्रोबैट, अडोब रीडर, पीडीएफ रीडर. That is free. You can install on your system. When you open the PDF through Adobe Reader, then that problem will not come. That content is missing, which many students are facing. It happens when you are opening the PDF on the browser. Then it is happening. But if you open it through Adobe Reader, through PDF Reader, then it will not happen. Okay. श्रेया, जीए का सेक्शनल इसलिए नहीं है because daily GA quizzes are being uploaded. You can practice from those daily quizzes. Yes. Okay. Vishwanath, we cannot say anything with certainty. There is some expectation about grade A, but again, nobody can say anything with 100% surety. Okay. This only RBI can tell. All right. So that's it, guys. We'll end it here. We'll meet again tomorrow. 8 p.m. 6 p.m. tomorrow, and we'll be taking up DI questions tomorrow. If you want, you can ब्रश अप दी मतलब उसमें आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज, ये 3 चैप्टर्स की मेजरली उसमें रिक्वायरमेंट होती है. स्पॉटलाइट के डेली लेक्चर्स नहीं होते हैं अंकिता. स्पॉटलाइट का वी विल, अभी मासूम मैम हैज डन द रिवीजन सेशंस. देयर इज नो डेली लेक्चर्स फॉर स्पॉटलाइट. ओके. Yes, there are no lectures for spotlight. We don't conduct daily lectures for spotlight, but we have done the revision, month-wise revision. You can watch those sessions if you have not watched the recently. They are going on only. Okay, चलिए. So we are closing it here. ठीक है? I don't see any further doubts. So guys, goodbye. Take care. Take good care of your health. Eat good food. Have good sleep. It's very important that you take care of your health, है ना? So we'll meet again tomorrow. Till then, keep studying. Take care. Goodbye and